It's fucked up. Hi Mitaji. Hi Joy. Hi Oman. Oman is already here. Handsome man. Guy handsome man was so good. What's up, bro? One second. Huh? Let me take Oman. Oman is joining us in a minute. Yo, why? How are you, my so music? What's What's happening, up, my bro? How guys? are you? I'm good. I'm good. How are you? बस चल रहा है भाई. सो रहा था मैं तो आधा सो गया था. नींद में तो उठा अरे हूँ. यार, ये अल्लाह. sleep ये schedule has नहीं. been too bad, man. हाँ. और बता कैसा चल रहा है ब्रो? Well, How is your quarantine going on? थोड़ा I guess your network is bad, bro. shit, sorry. What's up? Yeah. I'm saying your network is little bad. Now it's fine? Yeah, now it's fine. Now it's fine. Tell me what's Okay, up. what's up? What's happening? Nothing, bro. Was interviewing people, passing out days, thinking what to do next But when this thing gets. how did you think of starting with this? But No, man, it was the idea. A lot of people know, like, everybody knows you as Oman. Nobody knows you as Prateek Goel. Most of yeah, the people man, they don't. don't know My real name कि is that. मेरा real name, what, मतलब कहाँ से आया मेरा DJ, bro, basically. That is the scenario why we wanted to put this up. Before this, I've done a lot of people, मतलब lot of senior DJs also. A lot of people Yeah, wanted Maddock to and all of them. listen out, listen out their story. Akbar bhai, Akhtar bhai, Hmm. मैडॉक टेरी दे वांटेड टू नो कि क्या मतलब एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी यार कैसे Yeah, कोई आता है everyone has कैसे something. कोई आता है या सो दिस इज द आइडिया कि सबको कनेक्ट करेंगे थोड़े दिनों में आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट आल्सो सो Okay. लेट्स सी लेट्स मंडे ट्यूसडे probably there will be What's something good? different on base culture life. What is that exactly going to be like? What is that exactly going to be like? So I'll tell you, bro, later on. It is in the pipeline. I'm thinking, still Got thinking it. I should implement that idea or no. Because a lot Hmm. of people, now it is kind of at 5 p.m. A lot of people join us because if they like the artist, they will come and they will see, okay, Yeah, what was yeah, the journey? How was the journey? yeah. How did Hmm. they start? What differences, what problems I am facing in my current life? Did they face those problems? Because you are very young, you will be the best person to explain these people. You are from now's generation, Yeah, like our yeah, but generation, you can explain them how hmm. did you started, how was the family, how was the family supportive? भाई तुम्हें Everything is 15 different that way. Everything is like yeah very different that way. you So play it 10 depends on 15 shows a month, yeah, so you can tell them how did your journey started. Yeah, bro, it is like playing those obviously. shows also not that easy. You I at know, I know the it's at not easy or it's been a task as well because yeah. only hard work doesn't pay off to be honest when it comes to DJing or anything. You need to be smart enough and you need to know about it very well. Like what you're doing, you need to be aware of that. Yeah, ये true. नहीं कि बस म्यूजिक आता है या you know how to DJ also. That's not only important. You need to understand like I'm not ashamed to say that there are way more better DJs than me also when they are on the console, but they can't read the crowd. Till the time you True. can't read the crowd, if you don't please the crowd, it doesn't make sense. Yeah, correct. It doesn't make sense. That is number one. Number two, I get a lot of questions saying that how to start off with DJing, should I take classes and all of that. But it honestly doesn't make sense to start classes because today right now DJing has become like very easy thanks to Decade Box and a lot of more softwares. But Yeah. you can be at home also and learn a lot. Like अगर आप प्रोडक्शन अभी कर सकते हो घर पे बैठे बैठे तो डीजेइंग क्या है. True. So they can go to classes also, and it depends on honestly, it also depends on financial background because if you aren't that financially equipped, then you can possibly just learn from home. If your father has too much money to blow, then you can go ahead, probably buy a console of your own and do whatever you want to. It Yeah, depends on person to person as well. true. How did you started your journey, bro? How did Prateek Goel become So Oman? पहले तो ये ओमेन नाम कहाँ से है ये भी जानना है मेरे को सर. हाँ तो ये बहुत
बहुत लोग पूछते हैं। तो बेसिकली अभी मैं कुछ 17 साल का था, नाउ आई एम Hmm. 25, कुछ हो गया टाइम। मैं 17 Yeah. साल का था, मैं कॉलेज टाइम, एफ वाई जे जूनियर कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो था, म्यूजिक का बहुत शौक था कि हाँ म्यूजिक 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 म्यूजिक, जो भी हाउस पार्टीज होती थी फ्रेंड्स की, हम लोग की सबकी, हम म्यूजिक का बहुत शौक था मुझे, सब करता रहता था उधर, वर्चुअल True. डीजे पे टाइम पास करता था। तो True. 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 और पढ़ाई में तो माशाल्लाह था मैं, माशाल्लाह था मैं पढ़ाई में। तो ये तो ऑब्वियस था कि पढ़ना तो है नहीं आगे, बट घर वालों को डिग्री चाहिए थी तो ले ली, बट Yeah. पढ़ना तो था नहीं मुझे आगे। तो मेरे एक दोस्त ने, जो शायद अभी इधर है, नहीं है, नहीं इधर फिलहाल तो नहीं है, मेरे एक दोस्त ने, नाम उसका ऋषभ चड्डा है, वो Hmm. मेरे घर पे आया और उसने मेरी फैमिली से बात की, माय मॉम एंड माय सिस्टर। Hmm. So my sister knew some people who were running a DJing institute and all of that, which included money. Hmm. Okay. Shameless So plug. yeah, he was a part of Okay. it as well. Hmm. So he's also taught me quite a few lessons. In fact, Oh, back in okay. the day, yeah. So back in the day, he's taught me quite a few lessons. Hmm. So then there they pushed me for DJing and all of that. So I started, and here I am today. जहाँ पे भी अभी. Hmm. But my first break, where the name also from where Omen came from, was also very big. Hmm. So obviously I had a lot of friends around and all of that. And वो time पे more than making money or doing events was just for the pleasure. कि मन है वो एक coolness जो होती थी ना पहले, कि हाँ मैं I do events and all of that. तो वो Hmm. टाइम पे हम लोग कुछ, ये लोग 25-30 दोस्त थे मेरे, Hmm. वो लोग ने किया। मैं Hmm. ओपनिंग एक्ट था वो टाइम पे, स्काइटो करके एक डीजे था। Hmm. तो अभी प्रतीक तो बहुत वियर्ड साउंड करता था डीजे नेम के लिए वो टाइम पे, क्योंकि ये कुछ 7 साढ़े 6 साल 7 साल पहले की बात है। Yeah. तो वो टाइम पे तो बहुत अजीब साउंड करता था वो टाइम पे। अनीसूद और ये लोग सब लोग जस्ट आ रहे थे, लाइक Okay. दे वर जस्ट देयर। तो मैंने बोला नहीं छोड़ो, कुछ नया नाम देते हैं। तो Hmm. मेरे एक और दोस्त थे, रैंडमली हम लोग सब लोग बैठे थे, सोच रहे थे कि क्या नाम देना है, क्या नाम देना है, तब ओमेन आया। Hmm. एंड दैट फर्स्ट गिग वाज ऑफ 2000 पीपल। Oh my goodness. हाँ, so and that was a New Year's gig. Okay. हाँ, so touchwood, like my first gig was a big gig, plus it was a Hmm. paid gig, which is Hmm. very surprising nowadays to get. Hmm. And True. yeah, so that's where it kicked off from. Hmm. So that's how Omen also came up and how I happened. सुपरमैन, यू डू अ लॉट ऑफ शोज ब्रो। तो मतलब लोगों को आपके लिए वो टास्क भी आपके लिए, व्हेन यू आर बिहाइंड द कंसोल आई नो यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। Yeah, So the I know the woman, I know the Pratik I have met the very first day. Most of the people don't know here. Me and this guy have met in the console only. This guy was yeah, playing and I joined. I just recently shifted to Bombay and this guy was a guy who was playing. So ये कोई आया yeah. ये It अंदर was walk in किया tonic, तो it was tonic, like tonic, yeah, tonic, yes tonic. on the place, correct place. Yeah. So you do 15 shows, bro. 10 to 15 shows are very hard to manage, bro. How do you manage it? Because I never heard Omen playing the same tracks in No, I two do. different places. I do, No, I no. do, I do. Honestly, I do because depends on place to place as well. Now, there are places. Now, honestly, Bombay is very Bollywood centric. Hmm. Now, techno is growing up, yes, but Bombay is very Bollywood centric. Very few places say that don't play Bollywood, and there are Hmm. very few places which say just play Bollywood. Yeah. So there are, and there are mixed as well. So Hmm. honestly, there are few, I'll say sets of mine of three tracks which go hand in hand. Like you always have that thing, ना, that ये track इसके Yeah. साथ best blend होगा. तो True, वो true, ऐसे true. 3 4 parts 10 15 ऐसे हैं जो कभी ना कभी यूज होते ही हैं. Obviously, like some of my friends, so obviously knew my set also at after a point. Then I started like back a year back or something. They started predicting my set कि अब ये बजाएगा वो बजाएगा. तब मेरा थोड़ा ईगो पे आया कि मैंने नहीं, this is not good for me as well, because True. if I am doing this, if my friends can predict it, probably there might be people Everybody who can come, predict it. yeah, like there might be Yeah. people who come for me regularly or even twice a week or something like that. तो वो बहुत weird हो जाता कि वो लोग बोलते हैं अरे ये तो वही सेम गाने बजाता है. तो Correct. that's when I started experimenting more, like अगर मुझे सेम गाना भी बजाना है तो मैं उसका दूसरा मिक्स बजा दूंगा. True. तो
कुछ डिफरेंट आ जाता है उसमें, मतलब एक गाने के चार चार मिक्सेस रखना पड़ता है, उस हिसाब से अपना रिकॉर्ड बॉक्स शफल करो, सब कुछ करो, तो वो Correct. है, बट यू डू योर होमवर्क वेल एंड यूर सेट, Yeah. दैट्स अबाउट इट। So a lot of people who young talent यहाँ पे जो आते हैं लोग बहुत questions पूछते हैं। एक 1 second, let me say hi to everybody whoever is there. सुखी पाजी is there. सुखी पाजी कैसे हो आप? Samir is there, Hmm, what's up Samir? Nelson is Tanish, there. Hello Nelson, Nelson. what's happening Nelson? Ishan is there. Techno is growing. Ketan sir is there. Hello Ketan sir, how are you? मेरे को तो दिखे पता नहीं चलता था कौन से लोग एग्जैक्टली क्या ऊपर है। ऊपर ऊपर scroll अच्छा scroll. दबा So दो। do you know about नेथिन बोमॉन्ट, Momo? आर्यन Aryan is रूपानी, there. आर्यन रूपानी is the owner of Dovi Resto Bar. Okay. What's up Ishan? Nelson भाई Okay. Yeah. है। I keep visiting Jalwa. Somebody is saying. Rohit Advani is saying I keep visiting Jalwa. Jalwa is next level place, man. Jalwa is beautiful. I love the place obviously. True. So let's go ahead, bro. So was the family supportive when you started DJing? Mom and sister were very, very supportive. Dad Because was not that supported, to be very honest. when you started it, you were 17. 17 साल में तो एंट्री भी नहीं 17 मिलती मतलब बॉम्बे 18, में। 18 साल का हो गया था मैं, मतलब जब एंट्री भी उधर नहीं चले गए। मिलती ब्रो बॉम्बे में, तो एंट्री नहीं देते क्लब्स में तो। अभी सच्ची बोलो तो मतलब मिल ही जाती है, अगर जिसको जो थोड़ा बड़ा लगता है, बट मिल ही जाती है। हाँ तो आई वाज 18 एंड हाँ, वो टाइम पे इतना क्लब शोज ये सब था ही नहीं। वो टाइम पे एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के डीजेस को बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है, क्योंकि इतने क्लब्स खुल गए हैं, इतने रेस्टो बार सब खुल गए हैं कि ऑप्शंस ही इतने हैं कि सबको डीजे True. चाहिए ही आज के डेट में। वो टाइम पे गिने चुने 5 या 6 क्लब मुझे भी पता होंगे, शायद प्रिवे था, रा था, पॉइजन था, ये मतलब गिने चुने 5-6 क्लब्स थे ट्रेस तो जिनके रह गई। ट्रिस्ट नहीं था वो टाइम, नहीं अच्छा, ट्रिस्ट 18 साल का जब मैं था। हाँ ट्रिस्ट था सॉरी ट्रेस तो ट्रिस्ट रह था। गई ब्रो, ट्रेस तो हाँ हाँ बहुत पुराना है। हाँ। ट्रिस्ट तो मतलब सारे डीजे का, मतलब हम लोग के एज का वो टाइम पे तो ड्रीम था। या वो टाइम पे करेक्ट। ड्रीम था कि ट्रिस्ट पे बजाना है, और ट्रिस्ट तो फिर मतलब रेगुलर ही हो गया फिर ट्रू। इररिस्पेक्टिव। तो दैट हैपेंड, एंड वो टाइम पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हाउस पार्टी ज्यादा होती थी वहां पे, हाउस पार्टीज करेक्ट। होती थी। वहां से थोड़ा थोड़ा ग्रो होके फ्रेंड्स का बर्थडेज हुआ, ये सब हुआ। No, it happens that way only, yaar. I think that happens. A lot of young people keep on asking questions. कैसे start करना है? Today is the right person to ask question. Gigs बोलो, age बोलो, everything. Today I guess you should shoot him so many Shoot. questions. जिनको जो पूछना है आज पूछना चाहिए, because he is one of you guys. So he is one of us basically, not इसको आप बोल नहीं सकते हो कि ये हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ा सीनियर है, बट इसने ये नहीं आप ही यार, की तरह स्टार्ट किया है इसने, और आप ही की तरह किल कर रहा है सीन में, तो आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। बस सो सीनियर माई तो बोलूंगा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है यार अभी तो, और या बहुत ट्रू लंबा ट्रू है। ट्रू ट्रू। सीनियर तो सो चांस ही नहीं। सो योर इंस्पिरेशन हु इंस्पायर्ड यू फॉर डीजेइंग ब्रो? नो इंस्पिरेशन एज सच, बट हाँ मतलब आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ट्राई किया। उसके बाद back then David Guetta was one of my idols because या he was bloody good that time. वो टाइम पे तो आपका वही सेक्सी बिच एंड पता नहीं क्या क्या, वो टाइम पे बहुत चीजें निकली थी उसके। वो दैट टाइम ही वाज लाइक द वन हु पॉप blended म्यूजिक house बेसिकली, pop, म्यूजिक he विद पॉप blended या। house and R&B basically, so he या brought in the culture that time। तो वो उस टाइम 2012 में तो इंडिया पे भी आया था वो। इंडिया, आई रिमेम्बर दैट टूर आई अटेंडेड इन पुणे पूना। पुणे या Yeah, I पुणे। was there in that show. Anisu was opening for that show. I couldn't go there, From वो there, I थोड़ा guess सा। Anish got. Yeah, Madoc is also here. Oh, Mr. Maddock is here. Big man is here. The actual senior is here though. No, senior, we had a lot of fun other day. I don't know how patiently he asked so many questions. So many with so much patience, man. He's beyond patient that way. Yeah. Somebody's So उनका asking patient. where did you do coaching? Like, where did you learn DJing? It was called Skyways, shot like years back, but two people taught me. One was Shameless Money and one was Suji. That's
His name is Two Way right now. I don't know if Okay. he's still DJing or no, but yeah. Okay. Money And taught you. This is the first time I am also hearing that money taught you. this guy मुझे भी नहीं manages पता. money. This guy manages money, just like everyone. So like one speciality like the club owners should see when they come and they book women. Apart Uh, from DJing, Speciality, I would not you want to say say one anything USP like basically. USP. See, honestly, like the world tells me this कि मैं बहुत नाचता हूँ apparently. अच्छा, वो जो okay, मुझे भी पता है. But true. मैंने ऐसे नोटिस भी किए कि अगर मैं ऐसे ठंडा खड़ा रहूँ तो बहुत अजीब लगता है. बहुत अजीब हो जाएगा. बहुत ही Yeah, अजीब. मैं true, खुद भी true, अजीब true. लगता है और वो क्राउड भी बोलता है कि यार ये ठंडा डीजे है. तो क्राउड ऑल्सो शुड सी दैट कि हाँ मतलब डीजे भी एंजॉय कर रहा है, उसको भी पता है वो क्या कर रहा है. अगर क्राउड ही ठंडा है, क्राउड भी ठंडा रहेगा तो मैं भी ठंडा रहूंगा. अगर क्राउड ही एनर्जेटिक है तो खुद भी वो होता है. प्लस स्पेशलिटी फॉर क्लब अभी मैं if your music is talking for you, then you don't need any other USP, to be honest. If your music True. is working well, then I don't think so you need anything else. Hmm. So one question which I have never asked anybody. Any other profession if you're not a DJ? Chef maybe. Out of the box, but chef maybe. Hmm. Any favorite childhood memory? Favorite childhood memory. Not that I can recollect of. Like बहुत हुई है यार. मतलब क्रिकेट एंड बिल्डिंग में जो मस्ती करते थे, सब कुछ बहुत स्कूल बहुत 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 चीजें हुई है वैसे तो. एक Someone पर्टिकुलर asked, कुछ नहीं. someone asked, do you use sync? So Never. one question is this, another one is how to get in Sunburn today. If you want to join a class, which one it should be? Okay, so somebody is asking if they want to join a school today, Why which am one I it should not be? getting the questions or anything? Is there some problem with I'll read it मेरे out को for you, no क्वेश्चंस भी problem. नहीं आ रहे. ये भी मेरा मूव नहीं हो रहा है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है पता नहीं. I'll अगेन read बट it out for you. I'll हाँ read it बोलो out for you, बोलो no problem. बोलो बोलो. So somebody is asking, do you use sync? No, I've never ever used sync. I Okay. hate that part of DJing. I would rather move the fader plus 16 for all I care and then use the reset button, but I will never use sync. Yes, I don't use headphones. Simple reason, you do your homework very well on record box at home. You don't need True. to use sync. You match the first beat properly. आपको sync यूज करने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी. वो बार बीट मैचिंग होता ही है ऊपर, तो आपको टेंशन ही नहीं है. Okay. So today, if we want to join in a class, which one it should be? किसमें जाना चाहिए basically? वो somebody is asking. कौन सा? क्लासेस तो बहुत सारी हैं अभी. आप डिपेंड करता है लाइक आपको प्रोडक्शन करना है, आपको डीजेइंग भी करना है, सब करना है. प्रोडक्शन के लिए आई कैन सजेस्ट ट्रू स्कूल ऑफ म्यूजिक इज देयर, दैट्स फॉर डीजेइंग एज वेल. एंड Lost Stories Academy is there, and if you want to learn, you can go to Nelson teaches. And Okay. Yashvardhan, a guy there. Audio Cube is there. Audio Cube is very Yeah, nice. yeah, Jay, yeah. Jay is there. All of them. Like Madoc they are also so very. suggested a school. I forgot the name. High Chris, no, some high tech, something like that. Some High place Tech Madoc Academy. also. High Tech Academy. Some That's place also very Madoc good. also suggested. Yeah. That's also good. So bro, share us experience. How was DJs like you played Snake. opening set for Snake at Holi. So how was the experience? I'm Actually, sure it that was one was the biggest show of your life, I think. yeah. Because That was the biggest of my life. yeah, That set was way more special because it was a set right after Snake, not that's even right before. after Snake. Okay. Yeah, so he had already banged it. So I had an opportunity to keep that level up. Vibe up. True. Yeah, I had the chance to play whatever the fuck I want. I feel Rap both the sets are very difficult. One just before him, one before, yeah, one after. one just after him. Because And before him, if you cannot push it way too hard, one after him, if you don't maintain that level, people will be like, क्या रे, क्या कर रहे क्या बचा रहा. हैं? True. And I experienced both this year at Holi then. Okay. I was playing right before Vini Vici, Okay. and then I was doing the closing act. Okay. And closing, I don't know how, but it was like around about 2:30. I didn't see a single person move from the ground. Before me also, there was Ritviz, there was Ali. All of these guys were there. They kept the crowd going. कोई हिला नहीं है 2:30 तक. 2:30 to 3:15 जब मैंने प्ले किया और एक और बार, कोई हिला नहीं है. मतलब 2:30 तक भी कोई हिला नहीं है. 3 o'clock तक भी कोई नहीं हिला है. They didn't want to go back. That was very surprising because how he
how how bad the weather was. इतनी गर्मी plus corona भी फैला हुआ था. Yeah, true, Irrespective, true. nobody was ready to go. Nobody wanted to go. Okay. So A lot of gigs got cancelled as well. a lot of them, right from Yeah, your yeah. weddings to club shows. No, how was the I experience? You didn't mention the experience, bro. Like Snake, I'm before sorry. starting. Yeah, yeah. So experience was amazing. Like I was technically the only Indian artist to tour the entire thing with Snake, like do Okay. all four cities. Okay. So Mumbai one was hands down the best because there were like 25,000 people, and it was insane. Like the glimpse of it only like till your eyes can go. I saw people to a point. So I Yeah. was like, it's another experience altogether, and honestly, leg shiver after a point. Mm-hmm. फटती True. तो है भाई, फटती तो है, True. कुछ भी कर True. लो, True. क्योंकि True. 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 आपके पहले स्नेक ने बजाया अभी, Hmm. आपको एक बेंचमार्क मतलब चांस ही नहीं Set है, हो गया already. Yeah. Yeah. वो True. तो True. चांस ही नहीं है, कौन हूं मैं इरिस्पेक्टिव, बट Hmm. ये नहीं है कि लोग भी बाद में भूल जाए कि कौन हूं मैं, वो एक सेट करके जाना पड़ता है कि हाँ ये डीजे था, कोई ठीक है. नाम तो याद रहे वैसा. और कोई माइक क्वेश्चन? मैं किसी का क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ. माई क्वेश्चन 1 सेकंड ब्रो. शुड आई जस्ट गो एंड कम बैक इन अ सेकंड, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट मैं भी तो देखना चाहता फिर. या लेट्स रीजॉइन 1 सेकंड. बट मैं इसको सेव नहीं कर पाऊंगा फिर ब्रो. प्रॉब्लम ये हो अच्छा जाएगा. ठीक है, चलो छोड़ो, नो प्रॉब्लम. So it आप is बोल दो like क्वेश्चन. how did you get in contact with Wink Entertainment? ये किनका क्वेश्चन है? Looks like Rajiv. Somebody is asking. Looks like Okay. Rajiv. So Wink is technically my baby as well, to be Okay. very honest. And like I guess 4 years back, my manager Mohit Bijlani, so you to know him. Yeah, I know. So he had one company called Team Innovation. Yeah. So अगला क्वेश्चन वो भी है. Bro, please tell us about your growth through Dream Innovation, please. So somebody Nave Entertainment is asking. Nav Entertainment is asking. who never NAV, Nave Entertainment. Yeah. I know these guys. So I'll start off with that only. I'll start off with the Team Innovation thing. So what happened was I had given up on DJing, to be very honest. Okay. बीच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि 4 साल पहले महीने में 2 शोज मैक्स टू मैक्स, वो भी मुश्किल से, उतना इनकम नहीं था. तो आज लाइक ठीक है भाई, मैं अभी कुछ 22 साल का हो गया, मुझे कुछ तो करना है लाइफ में. सो आई स्टार्टेड अ टिपिकल 9 to 5 जॉब. Okay. एंड फिर एंटर किया मिस्टर मोहित बिजलानी, and he was an 18-year-old kid. He was an 18-year-old child. Like he's 22 right now, but he was an 18-year-old. And we shook hands in like October, and I knew him since a long time. मतलब जब मैंने मेरा पहला गिग किया था तभी भी वो इवेंट्स में उसको बहुत शौक था. वो he's always been fanatic for events and everything. तो तब आया वो, उसने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया ट्रिस्ट में ही, वो भी. Okay. He was managing Trist, Alibi, and a club called D-Bell that time. Okay. So उसने पहला ब्रेक दिया ट्रिस्ट में, and he didn't sign me that time. So जब मैं ट्रिस्ट में प्ले किया तो ट्रिस्ट था भाई वो टाइम पे. अभी इतना बुढ़ा हो गया है वो क्लब, वो टाइम पे फिर भी था. So I played on a Wednesday night over there, and the turnout from my side also, like he never asked for crowd or anything, but the turnout from my side was insane. Plus the night was banging. So and he was like, bro, sick music and all, and we technically hit it off. And he started managing me. He's like, I'll start managing you. I'll give you shows and all of that. We'll work out and all. So from there we started, and now here we are. And Team Innovation right now, I'm technically a working partner in that company as well, because I do all the admin backend work. In terms of the innovation we talk about, is the admin backend work is done by Mohit, me, Akash is there, Siddesh is there. We're 4 guys who handle a lot of stuff together in Team Innovation. And Wink is basically Akash, Siddesh and Mohit. So when Team Innovation used to do ticketing as well for for Sunburn and everything, and Siddesh used to do it through Grapevine. They both decided to merge in and start Wink, and that's how Wink is there today.
and that's how I'm associated with Wink as well. Super, man. So whatever works in your favor is always good, man. Yeah, exactly. At So the end of the it day, everything clicked, to be honest, because I am also too much into events. Like it is a passion as well. Like I love yeah, doing the back end work also, planning the event and what name to call it and what ideas can we do, what different yeah. things can we do, how can we execute it. ये सब मुझे मुझे भी बहुत पसंद है. तो मैं ऑटोमेटिकली इट वर्क्स फॉर मी ऑल्सो क्योंकि मैं बाद में देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है. True. How was Dragonfly experience? Looks like Rajiv asked the question. And Dragonfly is one of my favorites right now. Like Team Nation is only managing it not because of that, but before I joined, like before Team Nation joined also the place, I loved that place. So I don't know if the owner is no. So the owners are Apeksha Kapoor and Priyank Sukija. Yeah, So Priyank has a godly brain, to be honest. He is a magical man when it comes to yeah. his outlets. Jalwa, Lord of the Drinks, Drinks, yeah, Tamasha, true. Dragonfly. Tamasha. Like everyone knows these places very well. They're Yeah, doing very well and they're very famous. So Dragonfly is an experience to be honest. Like the way it's made, it's a huge as people place. So it's made like in a circular dome shape. बहुत ही Okay. amazing जगह है with two huge screens. And plus, if you do your SFX over there, वहाँ पे हम लोग ने चेतस की नाइट की है, बहुत सारी नाइट्स की है. वहाँ पे SFX जब कर रहे हो तो अलग ही फील है वो जगह का. It becomes a mini concert only. Okay. Super. Okay, somebody is asking, do you ever play at Opa? How was the experience, man? Opa played a lot of Mm, times. yeah. कौन है ये? Opa experience is always good. This is DJ Vicky official. Okay. Opa has always been good as well. Opa is one place which never plays Bollywood, by the way. Okay. That place has, I don't remember if they've ever done Bollywood. No, Strictly I don't think commercial so. and hip hop. Hip Strictly hop. commercial and the crowd is vibing throughout. Like crowd को भी पता है कि कौन सा गाना है ये. If I play a very underground hip hop also, they'll know because the crowd is that well educated over there. True. And they know कि यहाँ पे hip hop बचता ही नहीं है. और मतलब Bollywood बचता है. बॉलीवुड बचता ही नहीं है. बॉलीवुड बचता ही नहीं है तो वो लोग आते ही कमर्शियल हिप हॉप थोड़ा सा ट्रैप एंड वहां पे मैंने कभी कभी फ्यूचर हाउस खेलने की कोशिश की है एंड इट रिएक्टेड वेरी वेल. द रिएक्शन वाज वेरी गुड. तो द क्राउड इज वेरी वेल इक्विप्ड दैट भाई ये नव एंटरटेनमेंट पूछ रहा है, who's the man behind Omen, please? I guess they have asked the man behind Omen. He answered it already. वे. मोहित बिजलानी. Honestly, there are three people behind. There are a lot of people behind Omen actually. To wherever I am, my photography team, Code Black Creative, Team Innovation, Wink Entertainment, Mohit Akash Siddesh. There are a lot of people behind it because my social media मेरा की. क्योंकि आज के डेट में it's become so difficult to just be a DJ. Yeah. आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ठीक है गए म्यूजिक बजाए आ गए. नहीं, मैनेज Yeah. करना. यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ दैट वे. उतनी अच्छी फोटोज खिंचवाओ, उतने अच्छे से अपना सोशल मीडिया हैंडल करो. Maddox does Sure. it on his own. His social media is hats off, no doubt. But everyone has their own thing. Like it's not, if you want to start off also, आप फर्स्ट में आपको शायद आपको पे ना मिले या कुछ भी, but you have to invest as well. Your photography, your videos are very important. Your profile, everything. True. So, Omen, I would not say a man, it's a team I have, and I'm very lucky to have them. Super. So one thing, like जो आप बोलो आपकी bucket list में है जो अभी तक आपने achieve नहीं किया है. Somebody is saying, and you have okay, Ultra. Somebody is saying Ultra I'm and 18. Tomorrowland, both. Somebody saying I'm 18. I have played in Cult and Mitro, brother. I do follow your music. Can you give me some tips? This is DJ Vicky official. He's played at Kalra Mitro, then next is Opa. He wants some tips for Opa. Opa, he already mentioned, I guess, hip hop music goes. You see, honestly, you can't. There are no tips exactly. Whatever music you have to play, you have to play. You just have to make sure the crowd is enjoying and your music is on point. Now, how to get there is how well you play at your other gigs. If you play well at Mitro and Cult, if you play anywhere,
कोई ना कोई कभी ना कभी रहता ही है जो आपको बुक करेगा, या योर बेस्ट पीआर टुडे इज योर वर्ड ऑफ माउथ। आज के डेट पे अगर आपके भी कोई फ्रेंड मेरे कोई गिग पे हो, ब्रो वो डीजे था, वो बहुत अच्छा बजा रहा था, लाइक कौन था वो, तो इट हैपेंस, कोई ना कोई पीआर किसी ना किसी को जानता है, या कोई ना, वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स द मोस्ट। जितना अच्छा आपका काम रहेगा उतना बेटर आपका नाम रहेगा बेसिकली। Your favorite Indian DJ, Yogesh Singhvi is asking, yeah. Favorite Indian DJ? That guy disappeared now. I don't know why, but Nuclear hands it down. For a simple fact that I have never ever met any DJ being that big and being that humble. Yeah, yeah. That guy is beyond humble. Like Yeah. I had opened for him once, and backstage थे, वैनिटी खड़ी थी, ग्रीन रूम थे, सब थे, बोलते नहीं यार मुझे मन नहीं है। He's gone, he's taken a chair nicely, he's relaxing on the chair, doing his thing, ऐसे पैर ऊपर करके बैठा है, चिल कर रहा है, बुला रहा है सबको, हाँ बात करो, कुछ नहीं। मतलब मैं ओपनिंग एक्ट था, उसको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ वो टाइम पे, तो मतलब ये 2-3 साल पहले था बैंगलोर में, एंड पता नहीं मैं कौन हूँ क्या है, बट हाँ आजा आजा चिल कर, हैव अ ड्रिंक, हैव अ स्मोक, व्हाटएवर। सो ठीक है भाई, है ये बंदा, मतलब वेरी वेरी स्वीट, Very, very, very sweet. So बियॉन्ड हम्बल। yeah, my all the meetings with him are special, man. So whenever I have met him, this guy, like I have found him so grounded, so grounded. Yeah, मतलब वो beyond grounded. इतना ज्यादा, मतलब कोई कैसे हो सकता है? He's very humble, man. He's very very humble. Like that is very difficult to have today. Yeah. So one rapid fire thing. Describe women in 3 words. Hyper. Hyper. I'm telling you, very hyper. When it comes to music and everything on the console, I'm very hyper. Doing my homework well, and I'm just passing 3 statements. And camera conscious. Camera conscious. मित्रों से bro येड़ा मिलेगा. Try double XO because 3 of managed by same company. Okay, somebody is saying someone. You guys achieved success in young age. Okay, yeah, true, man. That's why he's here. Short-tempered, crazy, and kind. Somebody has already said. Oh, this. Smriti Goyal. That's my fucking sister. that short-tempered. He himself agreed. Crazy. No, short-tempered. He didn't agree. Crazy. Short-tempered he agreed. Short-tempered Kind. people who are close to me will know this. Will say this. A lot of people are commenting on this question, man. Great heart. I'm sure. Great heart. Who said great heart? Great heart is Rishabh. Gadda. Very Who good. is saying? One second. What is your qualification, bro? BCom graduate. Super. Like I said earlier, family को चाहिए थी डिग्री, तो मैंने दे दी। कुछ जो सबसे इजी था कर लिया। Yeah, पास हो गया बस। true. Have you worked with catch events? भाई बहुत क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इवेंट्स वाले ही बहुत क्वेश्चन है। कैच तो Okay, हाँ, so obviously बहुत काम किया वो लोग के साथ। favorite music genre, bro? Like one favorite. I guess we don't have a choice to be have a favorite. मतलब एक सबसे अच्छा वाला। मतलब मेरे को 2 जॉनर थे जिसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आता है प्ले करने में। एक है ट्रैप ऑब्वियसली एंड हिप हॉप। दोनों का वाइब एकदम अलग है। एक टोटली रिडिकुलस है, एक टोटली मिक्स है, बट बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सो आई ट्राई ऑलवेज टू ब्लेंड बोथ ऑफ देम टुगेदर। लाइक मैंने ये लास्ट होली पे जो किया था वो मैंने दोनों ब्लेंड करने की कोशिश की है। मेड मैशअप्स, हैव डन ऑल ऑफ दिस, सो दैट आई डिड। Somebody is asking, when are you opening your own event company? I guess he already has one. Team Innovation. Favorite radio show, if you follow any radio shows, like any podcast by anybody? No, I don't. I used to back in the day जब वो typical podcast रहता था, Hardwell on air, all of that, I used to follow to get new music, find new music, because that was back in the day. तब इतना open नहीं था music industry to get all your music. So that time I used to follow them, and now everything is out there. So जरूरत नहीं है। No, I still follow Afrojax, man. I still follow Afrojax. There are a lot of people whom I follow. Yeah, Jack Radio. Yes, I still follow that.
So Afrojack music is different. biggest addiction. Music. It can be good. No, genuinely, because so the thing with me is the ones who know me well also. If Yeah. I'm pissed off, I am frustrated, I want to beat someone up, I will just switch my phone off and start Yeah. downloading music and working on it. That is my getaway basically. Yeah. True. That's the only thing. होना ही चाहिए ब्रो वैसे like the thing which makes you comfortable when you are alone, when you're sitting, when you're depressed, when Exactly. you Like, are in any mood. hmm. तो वो if I'm happy like recently तो मतलब एक एक दो दो ड्रिंक पी के मतलब मैं चालू हो जाता था. Fuck it, Hmm. मतलब फोन साइड पे रख दिया, चालू हो गया हूँ मैं. क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी तो. हाउ मच ऑफ पीपल से कि हाँ वर्क ऑन योर म्यूजिक, यू कैन प्रोड्यूस सो मच एंड ऑल ऑफ दैट. ब्रो एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान, क्योंकि सिर्फ Hmm. कंप्यूटर के सामने तुम नहीं बैठ सकते हो. कितना करोगे, क्योंकि कर करके भी So कितना करोगे. Rishabh have asked a question. Please ask him where does he get so much energy from to jump on the console all the time during his gigs? ये दिस राज गाय. नो आइडिया. ये राज एक्चुअली ये राज ही रहेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता. और ये बंदा हर सैटरडे मेरी गिग पे आता है. ठीक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हर सैटरडे मेरी गिग पे आता है. तो ये बकवास कर रहा है. एंड ऑनेस्टली आउट देयर टू ऑल द डीजेस जो थोड़ा जब भी अभी चालू कर रहे हैं, वन थिंग आई नेवर डू ऑन द कंसोल 99% of the times is never drink. Okay. I don't drink at all on the console for a simple fact कि first breaking the cliche कि सबको लगता है हाँ डीजे तो मतलब बेवड़ा होगा, चरसी होगा, हर चीज करेगा. आधे लोगों को ये भी True. लगता है मैं तो और कोक पीऊं क्योंकि मैं जिस तरीके से नाचता और कूदता हूँ. जेन्युइनली मेरे को क्वेश्चन है. तो वो मैंने आज तक कोई भी ड्रग ट्राई नहीं किया. एंड आई No, डोंट it ड्रिंक is. ऑन. I guess I must say it is from inside यार. तू इतना feel करता है. That हाँ is the reason you dance so much. एग्जैक्टली. And आई एंजॉय माई म्यूजिक, आई एंजॉय द म्यूजिक बेसिकली. seeing you, I feel seeing you. A lot of people in the crowd be like यार ये इतना powerful नाच रहा है, मैं क्यों नहीं नाच रहा हूँ? True that. वो You getting वो the point? होता है, Yeah. वो होता है क्योंकि मैंने खुद देखा है. और मैंने एक नहीं, मैंने 3-4 बार नोटिस किया जब. सो देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई एम डाउन विद अ लॉट ऑफ फीवर, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मैंने आज तक मेरी कोई गिग मिस नहीं की है. चाहे मैं Yeah. 103 बुखार में हूँ, चाहे मेरी पीठ टूटी हुई है, चाहे मेरा पैर टूटा है, कुछ भी हो, लाइक व्हाटएवर बी इट, मैंने आज तक कोई गिग मिस नहीं की है. तो या गिग कैंसिल की हो वैसे. तो ये हुआ, मैंने किया. एंड आई वाज सुपर अनवेल. लाइक मैंने देयर आर टाइम्स कि मैंने एक हाई चेयर पे बैठ के मैं बजा रहा हूँ. तो Okay. उतना बुरा हाल में भी बजा है. बट दैट टाइम आई सीन कि लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है, मतलब म्यूजिक कितना भी अच्छा हो, वो एक बार मेरे को देखते थे और थोड़ा डाउन हो जाते थे ऑल ऑफ अ सडन Yeah. कि Yeah. ठीक है यार ये तो सड़ा हुआ आदमी है. एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है यार, अभी बीमार हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ. तो दैट डज मैटर. लाइक यू कांट स्टैंड एंड प्ले. दैट इज व्हाई इफ यू एवर सी any huge big act, you call, I am not going to compare because मेरी औकात ही नहीं उतनी compare करने की. But Martin Garrix, लो, Chainsmokers, Drew Taggart, पागल आदमी है वो, कैसे कूदता है वो ही जानता है. Yeah. तो True. all True. of these True. guys enjoy it. वो लोग को मैंने आज तक कभी माल मारते हुए या ऐसे कुछ नहीं करते हुए नहीं देखा. मैं वो लोग को मिल भी चुका हूँ. And they're damn chiller that way. वो लोग ऐसा कुछ no stress at all. They also just enjoy the music because they know if they don't do all of this, probably the crowd is also going to be like हाँ ठीक है ठंडे खड़े हैं. फायदा क्या है? Correct. No, if you are enjoying your own music, people will What is always it? Yeah, like follow you. exactly. Yeah, and yeah, they will also enjoy, man. Otherwise, तो they will be like ये भी ठंडा ही खड़ा है, हम भी ठंडे ही खड़े हैं, ऐसा ठंडा वाला ही है वो scene. ही. Oh, true. So, any suggestion to the young talent who is coming out, who is starting their career? Just work on your What music. advice, man, you want to give? Work on your music, nothing else. Nothing जितना else. तुम जितना तुम अपना म्यूजिक से काम करोगे उतना तुम बेटर बनोगे. और ऑल्सो ये मुझे हुआ है, मैंने किया है ये गलती पहले लाइफ में कि हाँ मैं मतलब बीच में एक फेज था 3 साल पहले कि हाँ सडनली मुझे बहुत गिग्स आ गई, बहुत गिग्स आ गई थी. तो मैं वो हवे में आ गया था कि हाँ अब तो मैं हूँ, मैं तो राजा. वो कभी मत करना. तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम राजा नहीं बन सकते. आज के डेट पे तो यू
take world's number one DJ also, DVLM ho, Martin Garrix ho, they will always meet you very humbly. तुम किसी को Yeah, भी जाके true. मिलोगे, लाइक ये तो बहुत साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले मेरे दोस्त और मैं हम लोग ऐसे गोवा में थे और डीवीएलएम एक शैक पे बैठा हुआ था, Okay. लेजिट शैक पे बैठे थे वो लोग ने एक्चुअली हम लोग के साथ एक ड्रिंक पिया, तो इतना बड़ा होके भी मतलब कर सकता है, तो हम कौन है? Just never get that ego in you that you're big, number one, and let your music talk for you, nothing else. True. आपका Divya, I have asked a very good question. When will you make your own music? I am working on a lot of stuff. I have a lot of stems, I have a lot of scratches there, but I am just waiting to find my own sound, because if True. I don't want to get mixed with the cliche, और बीच में मुझे कभी फंसना नहीं है कि ये सबके बीच में हाँ एक और है, एग्जाम्पल ऋत्विज है, न्यूक्लियर है, या प्रॉब्ली भीड़ में नहीं खोना. भीड़ में True, नहीं true. जाना है, हाँ. और अभी ये ऐसा हो गया है कि अगर मैंने कुछ निकाला तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है कि हाँ अभी कुछ तो अच्छा निकलेगा, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है, तो वो थोड़ा एक डर भी है बैठा हुआ कि क्या होगा, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं कि Madoc is replying, but you are a Raja. चालो सर Madoc जी. आपके सामने कहा सर. Okay, Madoc is replying. Oh, yeah. Now I understood why he's saying like that. Yeah. What did he say? What did he say? No, he wrote something like Babi. Call. बोल. Yeah. Thanks, man. Thanks for joining us. No Take care. problem. Stay Thank you so safe. much for having me. Else, Yes, you see you too, very, everyone. very soon, man. Stay home, stay safe. Thank you so अभी तो much. Yes. देखते हैं ये कब वापस खत्म होता है, कितनी जल्दी आ पाते हैं हम लोग. हाँ यार, अभी थक गया यार मैं भी यार, मेरे को. But true, if this thing would have happened, no, post April, I don't think so. Event वालों को ज्यादा कोई मतलब only club shows, I think. Rest of the people, I don't think so. उनको problem होने वाला था event industry को, क्योंकि weddings भी तब तक खत्म हो जाती है. नहीं यार, मतलब मेरी मई में भी वेडिंग्स थी यार, और मैडॉक को तो Okay, मतलब okay, मैडॉक okay. की तो पूरी साल में वेडिंग्स रहती है. Madoc is asking, when are you getting married? सर आप बर्बाद हो गए, मुझे बर्बाद कर रहे हो. मैंने क्या गुनाह किया है? Nice. But Maddock is very happily married, that I know. Touch wood. Yeah. Asked by Madoc. Nation wants to know when you getting married. Madoc का ही question है भाई. अरे Nation यार, नहीं कर रहा शादी का, अगले 3 साल तक तो शादी नहीं कर रहा हूँ मैं. छोड़ दो भाई उसको. 25 साल का अभी कर लेगा जब तक. आपने भी आराम से की ना यार, करने दो आराम से मुझे भी. Yeah. Okay, man. Thank you so much, bro. Take care. Nice having you on here. Yeah. Take care. Bye. Yes. Bye. See you. Bye. See you.